डेजर्ट हैबिटेट पार्ट 2 वीडियो लेसन में आपका स्वागत है। हमने पार्ट 1 में ये पढ़ा कि दुनिया में कहाँ पर डेजर्ट्स प्रेजेंट है, उन डेजर्ट्स के नेम क्या है, डेजर्ट में कितना एनुअल रेनफॉल होता है, एनुअल एवरेज टेम्परेचर किस रेंज में होता है। साथ में हमने ये भी देखा कि डेजर्ट में जो सॉइल पाया जाता है वो कैसा होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। एंड इन वीडियो लेसन पार्ट 2 टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कॉमन वेजिटेशन ऑफ थार डेजर्ट एंड कॉमन एनिमल्स फाउंड इन थार डेजर्ट। सो वेयर इज थार डेजर्ट present? Thar desert is present in Indian subcontinent. A greater part of this desert belongs to India and a small part of this desert is present in Pakistan. So the common vegetation found in Thar desert are generally drought resistant. Generally drought resistant का मतलब क्या है कि drought का मतलब होता है सूखा। जो plants थार डेजर्ट में पाए जाते हैं वो सूखे को बर्दाश्त कर सकते हैं, वो सूखा पड़ने से भी जिंदा रह सकते हैं। तो हम कॉमनली कहेंगे कि द वेजिटेशन फाउंड इन थार डेजर्ट आर ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दिस ट्रीज आर गम अरेबिक अकासिया, euphorbia or khejri. Then some of the common desert animals found in Thar desert are black bucks, gazelles, francolins, quail. Black bucks, gazelles, francolins, quail. Now some of the general adaptations of desert plants and desert animals. When you watch this video, you pause this part, take notes and then move on to the next part. जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी में ऐसी क्या खास बातें होती हैं, क्या स्पेसिफिक फीचर्स होता है। Let us read them one by one. Desert plants have thick waxy skin. They have large fleshy stem, thorns and thin, spiky or glossy leaves. Spikes protect them from animals. They have deep roots to collect water from underground. They also have long, shallow roots which spread over a wide area, and these plants lie dormant for years until rain falls. क्या खास बात है? अगर हम इन सारे पॉइंट्स को देखेंगे, if we look at all the adaptations of desert plants very closely, the main purpose of the adaptation is to prevent water loss. Main purpose क्या है इन adaptations का? कि प्लांट की बॉडी से पानी लॉस नहीं होना चाहिए, पानी के लॉस को रोकने में ये सारे adaptations मदद करते हैं, है ना। और उसी तरह अंडरग्राउंड से पानी को सोखने में भी ये एडेप्टेशन मदद करते हैं। फाइन। तो कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वाटर लॉस को रोकते हैं? थिक वैक्सी स्किन, ओके। देन कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो उसकी बॉडी में वाटर को स्टोर करने में मदद करता है? लार्ज फ्लैशी स्टेम। और फोटोसिंथेसिस भी ये ग्रीन कलर्ड लार्ज फ्लैशी स्टेम ही करता है डेजर्ट प्लांट्स में। इन डेजर्ट प्लांट्स द लार्ज फ्लैशी ग्रीन कलर्ड स्टेम्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. दे ऑल्सो स्टोर वाटर. द थिक waxy skin helps in reducing loss of water and it also reflects the heat. जो कांटे प्रेजेंट होते हैं, है ना, थॉर्न्स या फिर जो स्पाइक्स, वो क्या करते हैं? जो थॉर्न्स है वो एक्चुअली लीव्स है, लीव्स मॉडिफाई हो गए, बदल गए हैं थॉर्न्स में, और वो मदद करता है वाटर लॉस को रोकने में। देन जो स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, प्लांट की बॉडी में,
वो किसी भी एनिमल को रोकते हैं उस पौधे को खाने से. तो as a result, the plant remains protected. These plants have deep roots to draw groundwater. Okay? और ये प्लांट्स काफी दिन तक और काफी वक्त तक, काफी साल तक डॉर्मेंट रह सकते हैं जब तक कि उनको पानी नहीं मिलता है by rainfall. Similarly, some of the general adaptations of desert animals are long eyelashes, hairy ears and closing nostrils, thick eyebrows, wide feet. They can go without water for over a week. They can go months without food. Body temperature can change to avoid losing water through sweating. They are well camouflaged. Thick fur helps to keep them warm at night, and many desert animals live in burrows under the soil during the daytime and they come out during night time. These are some of the general adaptations, and we will be learning about, getting information about these adaptations specifically on cactus and on camel. Now let us look at the pictures of some of the desert plants. This is a plant named Gum Arabic Acacia found in Thar Desert, and this is another plant known as Khejri tree. It is also found in Thar Desert. If you see here, the leaves are very small, and the plant has, though it has leaves, but these are very small. These leaves have very small surface area which help them reduce water loss. Then a very famous plant of desert area is Euphorbia. We also call it cactus. And if you look at the picture here, we find the thorns present here, no leaves, green colored stem and deep root system. These are the adaptations of cactus to the desert conditions. Let us have another close look. This is also a cactus. It has this thorns and green stem, and it has extensive root system under the soil. Now let us look at the adaptations of cactus from the point of view of exam. That if you are asked to draw a cactus showing its adaptations, then you should draw this diagram, this colorful and well labeled diagram. What are its adaptations? That cactus has a thick waxy skin. It has large fleshy stem. ये जो green color का part है, this is large fleshy stem. Then it has this spikes, the leaves modified into thorns and spikes. Then it has widespread roots to collect water. Similarly, the desert camel has adaptations. अभी हमने 2 स्लाइड पहले इनके अडेप्टेशंस देखे थे. अब देखते हैं कि वो अडेप्टेशन इनको किस चीज में मदद करता है. सो इट हैज लॉन्ग आई लैशेस, हेयरी ईयर, okay, and closing nostrils that help to keep out the sand. Then they have thick eyebrows which stand out and shade eyes from the sun. धूप से ये जो thick eyelashes है, ये eyebrows हैं, ये इनको बचाते हैं. Feet is wide. इनके जो पैर हैं काफी चौड़े होते हैं so that they don't sink in the sand. They can go without water for over a week. 1 हफ्ते तक भी वो पानी नहीं पी के जिंदा रह सकते हैं. And they can go months without food. और वो क्या करते हैं, अपने ये जो हम्प है, कैमल के पीठ में से निकला हुआ होता है, इसको हम हम्प कहते हैं, उसमें वो अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं और इन द फॉर्म ऑफ फैट, और वो महीनों तक खाना नहीं खाने से भी जिंदा रह सकते हैं. और इनकी जो बॉडी टेम्परेचर है ये चेंज होती है दिन में और रात में टू अवॉइड लूजिंग वाटर थ्रू स्वेटिंग. दे आर वेल कैमोफ्लाज्ड. कैमोफ्लाज मतलब उनका जो स्किन का कलर है वो सैंड के कलर के साथ मैच करता है, इसलिए अगर वो सैंड के ऊपर बैठे रहते हैं, ढके हुए होते हैं, तो फिर उनको कोई ढूंढ नहीं सकता, पहचान नहीं सकता. उसको हम कहते हैं कैमोफ्लाज. Then it has thick fur that helps to
कीप देम वार्म एट नाइट। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि डेजर्ट्स में दिन में टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है और रात में टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंड लगती है। तो अब हमने इस लेसन को देखा और इस लेसन को देखने के बाद हमने कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठे किए डेजर्ट प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, डेजर्ट कंडीशंस के बारे में। नाउ समथिंग फॉर योर लर्निंग रीइंफोर्समेंट एक्टिविटी और होमवर्क। अब ये टेक्स्ट मैंने वेबसाइट से कलेक्ट किया, अब इसको पढ़ते हैं। कैन अ कैक्टस ग्रो इंडोर्स? इंडोर्स मतलब क्या हम कैक्टस को अपने घरों में उगा सकते हैं? 5 इजी टिप्स टू डू इट राइट। ये टिप्स 5 टिप्स दिए जा रहे हैं कि हम इसे कैसे कैक्टस को बहुत अच्छे तरीके से अपने घर में उगा सकते हैं। Growing cactus indoors isn't challenging. What determines whether the cactus survives or not is how well you take care of the plant. ठीक है, तो ये टिप्स क्या है? इनमें से मैंने आपके लिए यहाँ 3 टिप्स दिखाए हैं। The drainage system. The pots should have drainage holes in the container and ensure soil drains well for them to grow well. Light. This cacti love sunlight but not the direct one. During summer, you can move them outside on the porch which is unheated until when the temperatures get below 50 degrees, and when the plant is flowering, water regularly. These are some of the 3 tips out of 5 that I have shown you. On the basis of this information, I want you to answer the following questions. Question number 1, you bought a cactus plant and keep it on the window that does not face sunlight. However, as a practice, you water this plant every day. This is rainy season. Will the cactus remain healthy in your house? If your answer is yes, then provide reasons. If your answer is no, then also provide reason. Then which part of the cactus carry out photosynthesis? And the plants that survive in hot and dry conditions are called what? You have to find out. तो अब ये पहले क्वेश्चन को मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ कि आपने एक कैक्टस प्लांट खरीदा और उसको अपने घर की उस खिड़की पे रखा जहां सनलाइट नहीं आती है। ये बारिश का मौसम है और आप रोज उस पौधे को, कैक्टस को पानी देते हैं। क्या ये कैक्टस आपके घर में अच्छे से जिंदा रह पाएगा? अगर आपका मानना है कि हाँ जिंदा रह सकता है तो आप उसके लिए रीजन प्रोवाइड करेंगे कि वो कैसे जिंदा रहेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये अच्छे से हेल्दी होकर जिंदा नहीं रह सकता है तो भी आपको लिखना है कि क्यों आपको लगता है कि कैक्टस प्लांट हेल्दी होकर उस कंडीशन में जिंदा नहीं रह पाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है? यू हैव टू फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस टू डू योर एक्टिविटी। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। Pause the video and take screenshots. Use the screenshots to zoom, see clearly, make notes in science copy. Then read the learning reinforcement activity section and answer the questions which will test whether you have understood the growing conditions required for cactus. So thank you for watching and listening the video lesson.